Assalamu alaikum. Today we are going to write dialogue. First of all, we will see what the dialogue actually is. A dialogue is a verbal conversation between two or more people. When in writing, a dialogue is a way of showing a story instead of explaining one through writing. Now, before writing the dialogue, we have to look at the rules that are there for writing any dialogue, and you have to keep them in mind before writing any kind of dialogue. So, the first rule is we need a new paragraph each time a new person speaks. कि जैसे कोई न्यू पर्सन स्पीक करेगा दो बंदे जैसा कि डायलॉग में बात कर रहे होते हैं तो हर बंदे की बात शुरू करने से पहले आपको नया पैराग्राफ नई लाइन स्टार्ट करनी है. आप दो बंदों की बात एक ही पैराग्राफ में एक ही लाइन में नहीं लिख सकते. Second rule is what the person said is always kept in quotation marks. Quotation marks और inverted commas जो हैं आपको पता है कि डायलॉग में आपने जो भी बात लिखनी है किसी पर्सन के मुंह से जो निकली है वो आपने quotation marks में लिखनी है शो करने के लिए कि इतनी बात उस पर्सन ने कही है. Third rule is first word that a person speaks is always capitalized. ये तो आपको भी पता है सेंटेंस का जो है बेसिक रूल है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है. तो आप जैसे ही किसी पर्सन का कोई डायलॉग कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो जो है यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट सेंटेंस. Number 4 is use dialogue tags to show who is speaking. टू पर्सन बात कर रहे हैं डायलॉग में, आप दोनों के नेम ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे तो आपने हर पर्सन का नेम जो है उसके डायलॉग से उसकी बात से पहले उसका नेम ऐड करना है शो करने के लिए कि कौन सी बात किस पर्सन ने की है. And now the fifth rule is place commas and periods inside quotation marks. Period. The word period is used for full stops, so you have to use commas and full stops, and these things will be inserted inside the quotation marks. And now these are the rules that you will use before writing any dialogue. And now I'm going to give you the topic on which you have to write a dialogue. And the topic is importance of studies between two friends. You have to write a dialogue and the dialogue would be between two friends and they would be talking about importance of studies. दो फ्रेंड्स जो हैं वो स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस पर बात कर रहे हैं. उसमें एक फ्रेंड दूसरे को एडवाइस भी कर सकता है. ही कैन ऑल्सो consider his weakness and he can advise him and he can ask him to study and work hard. In this way, you will write one or one and a half page for this dialogue, and the rules will also be used, and the topic is also told.